in progress. Start again. So if you're very first time here, when you first join the business, your very first steps are to select your entry level, or we also call it activating your income position. You can choose the entry level that suits you. You've got first 4 Fridays of joining to achieve that, and the higher the business level, it unlocks more benefits and rewards. But what we're going to talk about and what we are be teaching for you to achieve is the ultimate level. Sasha? कोई भी बिजनेस लेवल, कोई भी बिजनेस में या एमएलएम, अगर आप ये बिजनेस में या इंडस्ट्री में नए हैं तो एक बिजनेस लेवल अचीव करना होता है। और काफी लोग हमको पूछते हैं कि ये हर महीने या हर हफ्ते करना है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिजनेस लेवल जो है, और हम एनकरेज करते हैं लोगों को अल्टीमेट अचीव करने का। यहाँ पर 4 लेवल्स है, लेकिन अल्टीमेट एक ऐसा लेवल है बिजनेस में जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बार आपको अचीव करना है, और सेकेंडली ये जब आप अचीव करते हैं तो सारे जो 8 तरीके के बोनसेस है बिजनेस में, वो सभी आप अनलॉक करते हैं। उसके लिए चाहिए है बस 800 पॉइंट्स। और ये you haven't spoken about plan A or B, right? Yeah, so that's plan B. Yep, yes. Plan B. तो इंडिया जो है वो, just quickly. That's finished. Sorry. Yeah, so इंडिया जो है वो प्लान बी में कैटेगराइज किया जाएगा उसके इंडिया को, और उसके लिए बस हमको 800 पॉइंट्स करना है, जो बहुत आसान है क्योंकि प्लान बी जो है वो 800 पॉइंट्स है और प्लान ए जो है वो 1500 पॉइंट्स है, जो काफी मुश्किल है। लेकिन इंडिया के लिए ये आसान बनाया गया है क्योंकि हमारा जो है अभी लॉन्च फेज है। Yes, Alan. Okay, so with the business levels, I've circled here the first line. So every product that when you buy or sell has a monetary level, and it also has a points level. So the points level of the product is how you achieve your business level. So for Ultimate, I think I heard you say, Sasha, it's 800 points. So you can do this 3 ways. 1, you can do it straight away. You buy product, get your 100 points, and you can use the product or sell it. Way number 2 is use other people's money. So just go through your networks, sell the product, and get your points that way. Or option number 3, do a combination of both. You can either buy some products for you or to sell, and then sell some direct to the customer to achieve your 800 points. ये जो अल्टीमेट का लेवल है, हम इसको 3 तरीकों से अचीव कर सकते हैं। पीवी जो है वो पॉइंट वैल्यू है, इसका मॉनेटरी वैल्यू भी है और पॉइंट वैल्यू भी है प्रोडक्ट्स को जब हम खरीदते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं, जैसे आले ने बताया। एक तरीका जो है, ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट्स खुद खरीद सकते हैं बल्क में या इंडिविजुअल। आपके पास 5 दिन है क्योंकि हमारा हफ्ते का कमीशन कैलकुलेट होता है। तो और ये 800 पॉइंट्स पहुंचने के लिए हमारे पास 4 हफ्ते होते हैं। जैसे आप साइन अप करते हैं तो ये 4 हफ्तों में हमको ये लेवल अचीव करना पड़ता है। तो एक तो है आप बल्क में खरीद सकते हैं, या दूसरा है जो आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेच के ये 800 पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं, या तीसरा तरीका है ये जो आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर्स को बेच सकते हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स आप खुद खरीद के ये 800 पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं आप। So the 2 important things that I want you to look at, number 1 is a new volume bonus. So this is the extra percentage which I'll show you in a minute, but ultimately you get the highest at 30%. And the other thing which you get straight away with Ultimate is gold status, which we also call the matching bonus. This one you learn about in the more advanced training, but this is where you earn a commission from the check of your downline. जैसे हमने बताया कि जब आप अल्टीमेट लेवल अचीव करते हैं तो हम काफी बोनसेस अनलॉक करते हैं। तो एक जो है ये न्यू वॉल्यूम बोनस है। जब भी एक नया ऑर्डर प्लेस होगा आपके अकाउंट पे, तब हमको ये न्यू वॉल्यूम बोनस मिलेगा। और परसेंटेज का ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। फर्स्ट 3 लेवल्स तो आप एक्चुअली देखो भी मत, क्योंकि वो हम नहीं रेकमेंड करते आप फोकस करें। टारगेट आपका अल्टीमेट ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्टीमेट अचीव करते हैं तो हमारा परसेंटेज जो है कमीशन का वो
30% है, और ये लाइफ टाइम परसेंटेज जो आप अनलॉक कर सकते हैं अल्टीमेट लेवल पे। और गोल्ड स्टेटस जो है उसमें वो हम ज़्यादा डिटेल में अभी शेयर नहीं करेंगे, वो एडवांस लेवल का जो कॉम्पनसेशन सेशन होगा तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये भी अनलॉक होता है जब आप अल्टीमेट अचीव करते हैं। Okay. The other thing that you need to know as well is to stay active. You need to do 100 points of products every 4 weeks, so you're qualified for your commissions each week. So again, you can do that by you purchasing products yourself at 100 points, you selling 100 points of product to customers using other people's money, or a combination of both. और ये जो एक्टिव स्टेटस है आपके अकाउंट का, 4 हफ्तों में आपको बस 100 पॉइंट्स करने हैं। ये बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड किया है तो आप अभी तक तो आपने जान लिया होगा कि एक ही पैक जब हम खरीदते हैं तो वहां पर हमको 76 पॉइंट्स मिल जाता है। तो ये 100 पॉइंट्स जो है एकदम बेयर मिनिमम पॉइंट्स है जो हमको महीने में अचीव करना पड़ता है, जस्ट टू कीप हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिव स्टेटस में रखने के लिए। और ये भी हम दोनों तरीके से ये अचीव कर सकते हैं। एक तो हम खुद प्रोडक्ट्स खरीद के ये 100 पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं, या कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेच के अचीव कर सकते हैं। So our qualification period for Partner Co, we are a weekly plan, so we get paid every week. Our qualification period starts at 12 a.m. on a Saturday and it finishes at 11:59 on a Friday. And also we are paid every Friday for the previous week's work. So whatever work that I do this week, I'm going to get paid on Friday the next week. हमारा जो कमीशन है, जैसे हमने पहले बताया, ये वीकली कमीशन बेसिस है। तो हमारा जो पेमेंट होता है हर फ्राइडे को होता है, और वो फ्राइडे को जो पेमेंट आता है वो पिछले हफ्ते के लिए है। और टाइमलाइन आप देख सकते हैं कमीशन कैलकुलेशन का। सैटरडे रात को 12 बजे शुरू होता है और 11:59 फ्राइडे को ख़त्म होता है ये हफ्ते का जो विंडो है। और व्हाट एल्स, यस, फ्राइडे को पेमेंट होता है हमारा। Yeah. Okay. So with our compensation plans, there are 8 ways you can get paid. The first column is your upfront income. So that's the money that you make straight away when you join the business. So number 1 is the retail profits, where you earn 30% profit on everything you sell. And number 2 is a new volume bonus, and we'll show you this in a minute, where you earn an additional up to 30% on every sale as well. अच्छा, अभी जैसे हमने बोला कि हमारा जो जब हम अल्टीमेट अचीव करते हैं तो 8 तरीके के हमारे बोनसेस है। तो हम आज के सेशन में बस पहले 2 या 3 तरीके के बोनस देख सकते हैं। पहला तो ये अपफ्रंट बोनस है, जो जैसे हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, द नेम एक्सप्लेन्स, रिटेल प्रॉफिट्स जो है, तो जो भी प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं उसके ऊपर हमको 30% मिलता है, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो है लेवल, बिजनेस लेवल अल्टीमेट है, तो वहां पर 30% हमको मिलेगा। और न्यू वॉल्यूम बोनस एक ऐसा बोनस है जो हर एक सेल पर हमको अगेन 30% मिलेगा। जो भी हम परचेस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट का सेल होता है उसके ऊपर भी 30% मिलता है। Okay, the next bonus, the middle column. This is now you started to build a business. You've got team, you've got people under you working together as a unit. For the volume that your team makes, you earn 15% in base commissions. And then in the third column, which is your bonus income, as your business grows and you hit different targets and titles, you get paid bonuses as well. ठीक है, पहले वाले जो 2 बोनसेस है वो तो अपफ्रंट इनकम हो गया प्रोडक्ट सेल का, लेकिन रेसिडुअल इनकम ऐसा है जब आप टीम ज्वाइन करते हैं और टीम आपका बढ़ाते हैं, जब लोग ज्वाइन करेंगे आपकी टीम को तो उसका जो इनकम आता है उसके ऊपर आपका ये है बेस कमीशन, और उसके ऊपर आपको 15% जो भी आपका टीम अर्न करेगा वहां पर आपको 15% मिलेगा। और बोनस इनकम जो है ये बाकी के 5 तरीके जो है बोनस के अर्न करने का, ये हम एक दूसरे सेशन में कवर करेंगे। Okay.
So let's have a look at the number one, retail profits and new volume bonus. So retail profit, as I said before, you earn up to 30% profit for every product you sell. So if you look at my example product, the cost price, I'll buy it for $4,200. I will sell it to my customer for $6,000, and I will make a retail profit of $1,800. रिटेल प्रॉफिट जो है ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. अगर हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और ये मान के चलो कि उसका आपका बाइंग प्राइस जो है वो 4,200 है और उसका एमआरपी जो है वो 6,000 है, तो वहीं पर एक यूनिट पर हमारा प्रॉफिट जो है वो 1,800 होता है. Okay, now when we sell this product, we don't just make the retail profit, we also make a new volume bonus. Now you heard me say before that every product has a money side and a point side. So retail profit is on the money, new volume bonus is on the points. तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके भी बता सकती हूँ. जब हम तो कंपनी जो है हमको बल्क परचेस करने भी देता है, तो जब हम फिजिकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो जब ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो वहाँ पर हमारा रिटेल प्रॉफिट भी है और कंपनी भी हमको हर एक नए परचेस के लिए न्यू वॉल्यूम बोनस देता है और वो है 30%. जो भी हम जो भी हम कमीशन जो हमारा है अल्टीमेट के ऊपर 30%, वो भी अलग से हमको मिलता है. So the business, though, I think you said it, Sasha, the business level, because you're an ultimate, you get the highest percentage at 30%. So if you've got 50 points on this product is 50 points, you'll get 30%. Whenever you calculate points, it's always in US dollar first, and then it gets converted. So 30% of 50 is 15, it'll be 15 USD, and that'll be converted to 1,395 rupee roughly. ये जो है एग्जाम्पल के तौर पर हमने डाला है, लेकिन पॉइंट्स कुछ भी हो सकता है एक्चुअली. तो 50 पॉइंट्स जो है पॉइंट वैल्यू, उसका 30% कैलकुलेट करके हमको जो यूएसडी में कमीशन मिलता है, वो जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसका अमाउंट है ये 1,395. तो जो भी स्लाइड हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट हो चुका है और अल्टीमेट का जो परसेंटेज है वो 30% है. So when you're selling a product to a customer, you're not only earning a retail profit, earning the 1,800, and you're also earning the 1,395, giving you a profit of 3,195 in this example. So that's for a customer. But also note, if you bring in a brand new team member or brand partner, for the first 4 Fridays, you will also get 30% of everything that they buy too. ठीक है, ये जो 2 बोनसेस है हमने एक्सप्लेन किया, इनका टोटल उन्होंने करके दिखाया है वो 3,000 से थोड़ा सा ऊपर है. तो ये हमारा हो गया एक यूनिट पे हमारा प्रॉफिट. लेकिन जब आपका टीम मेंबर कोई सेल करता है तो उनका भी परसेंटेज जो हमने एक्सप्लेन किया था थर्ड टाइप का जो बोनस है, वहां पर भी 15%, राइट? 15% बेस कमीशन हमको मिलता है. Okay, so next one we look at base commissions. This is making money when you're building a team. So when you start building your team, you come into the business and we're going to teach you to build 2 business lines, and then obviously those people or yourself will keep going down and down and down. In this compensation plan, you can build as deep as you want and you can also build as wide as you want. But we are going to teach you to build down, but that's where the strength of this business is. तो जब कोई टीम बिल्ड करने के विजन से आते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप डीप बिल्ड करें. तो यहाँ पर हमने 2 लेग्स दिखाया है और वो 2 लेग्स के नीचे जितने भी लोग आप ला सकते हैं आप बिल्ड कर सकते हैं. और ये जो लेग्स हैं हम एक दूसरे सेशन में एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन आप वाइड भी बिल्ड कर सकते हैं या डीप भी, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है अर्निंग का भी जो पोटेंशियल है वो डीप बिल्डिंग में ही है. Okay, so how do we get paid? So in this example, let's have a look at this picture on the left. So you've came in, you build 1 business line, you build number 2 business line. We've got volume. In this example, we've got 4 people earning 500 points each. That's 2,000 points.
And in line number 2, we have 2 people making 1,000 points, so we've got 1,000 points in line number 2. Anytime you have more points in the line, that's called a power line, and the line that has less is called a pay line. हम ये मान के चलेंगे कि चलो ये दो लेग्स में आपके 4 लोग हैं और यहाँ पर दो लोग हैं सेकंड लेग में, और फर्स्ट लेग जो है वहां पर पॉइंट्स जब आप कैलकुलेट करोगे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वहां पर 2000 हो गया, 500 पॉइंट्स ईच, और दूसरे लेग में 1000 पॉइंट्स है। तो जहां पर ज्यादा पॉइंट्स है वहां वो लाइन जो है आपका पावर लाइन कहलाएगा, और दूसरा लाइन जो है जहां पर कम पॉइंट्स है वो है हमारा पे लाइन। Okay, so here you see 2,000 points in the power line. We're going to put this one aside at the moment, and we're going to look at the pay line of the 1,000 points. So you earn 15% of whatever volume is in your pay line. You can have many pay lines, but in this example we have one. So we earn 15% of 1,000, so that'll be 150. It'll be US dollars, so 150 US dollars converted. In this example, will give us 13,963 in base commission. ये जो है एक सिंपल सा एग्जांपल है जहां पर हमने बोला कि 1000 पॉइंट्स जहां पर दिखा रहा है वो है हमारा पे लाइन, और उसका 15% का कैलकुलेशन दिखाया है। ये यूएसडी है लेकिन हमने आईएनआर में भी कैलकुलेशन करके दिखाया है यहाँ पर। सो 1000% का जो 1000 पीवी का जो 15% है उसका कैलकुलेशन करके 13,963 होता है, और ये हमारा बस बेस कमीशन है। और बेस कमीशन अगेन रिमाइंडर ये है कि हमारा ये टीम कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये एक अलग बोनस है। Now, what happens to the 2,000 here? Because you didn't get paid a baseline. So if you have a look down the bottom here, your power line was 2,000 points. We are going to subtract or take away 1,000 points in your pay line, because remember, you've been paid for this already, and you're going to have 1,000 points left over, and then we call them carryover volume. So what that means is in the new week, line number 1 will start with 1,000 points, because you don't lose those points. And line number 2 will start at 0 because you were paid on those points. और अगर आप सोच रहे हैं कि चलो हमारा पावर लाइन का कुछ वेस्ट है पॉइंट्स, लेकिन ये वेस्टेड नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2000 पॉइंट्स था, लेकिन हमने पे लाइन में ऑलरेडी हमारा 1000 पॉइंट्स का पेमेंट हो चुका है। तो ये जो कैरी ओवर है 1000 पॉइंट्स का जो रिमाइंडर है वो जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है दूसरे मंथ में। जब हम नया वीक शुरू करते हैं तो हमारा एक लाइन में 1000 पॉइंट्स होगा जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और दूसरा लेग 0 पे होगा क्योंकि दूसरा लेग के लिए हमें पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, कमीशन ऑलरेडी पे कर चुका है कंपनी। Okay. Now, optimization. When you first joined the business and you're placed in the business, you were positioned, and what you received was called an income position. That is your place where you are in the business. That's your income position. So you started building line 1, you started building line 2, the volume was going through, you got bigger and bigger, but it gets to a point where the maximum line will get paid is 2,000 USD. जब भी कोई ज्वाइन करता है वो है इनकम पोजीशन। जब हम टीम बढ़ाते जाते हैं, राइट, नंबर्स बढ़ते जाता है, और जब ये 13,334 पॉइंट्स रीच हो जाता है, ये है एकदम मतलब कंपनी ने ये एक लिमिट डाला है दोनों लेग्स पे। जब 13,334 दोनों भी लेग्स में रीच हो जाता है वो उसको बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन। और have you explained 1.82 already? I missed that, I'm sorry. Oh, that one? I've lost my pointer. So each pay line can pay up to 2,000 USD maximum, and that's when they reach the point value of 13,334 on line 1 and line 2. And if you have a look, the reason it's that 13,334 figure, because 15% is 2,000. So 2,000 USD is the 1.82 lots.
ओके तो ये जो है 13334 ये एक ऑड फिगर लगेगा आपको, लेकिन ये कंपनी ने एक लिमिट डाला है, तो दोनों भी लेग्स में, दोनों भी टीम्स आपके जो है ये जो 13334 जब पहुंच जाता है दोनों लेग्स में, तो वहां पर कंपनी क्या करता है, हमको उस फिगर का 15% देता है, और वो यूएसडी में कन्वर्ट करके 2000 यूएसडी देता है, और उसको कन्वर्ट करके 1.82 lakhs होता है. Now, because you have getting the maximum 2,000 points, what you have done, you have completed this income position, and that is called optimization. So when it's completed, you can't make any more than 2,000 USD on the pay leg. But this does not mean that the points stop or your business stops. When this is achieved, you can keep continuing your business, which is a more advanced training, but understand your job is to optimize as many of these income positions as you can. अगर आप ये विजन लेकर आते हैं कि हमको टीम बिल्ड करना है, टीम बढ़ाना है, तो हमारा ये गोल होना चाहिए ऑप्टिमाइज्ड इनकम पोजीशन पहुंचना, जो दोनों भी आपके लेग्स 13334 पहुंचे, फिर 2000 यूएसडी मिले हमको, और उसके बाद जो है हम एक दूसरा वापस से एक इनकम पोजीशन शुरू कर सकते हैं. तो ये ऐसा ऑफ कोर्स एडवांस ट्रेनिंग में और एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन ये जो है बेसिक हमारा टारगेट होना चाहिए. Okay, I want to go through a couple of bonuses as well, so you can see what's going on. So, first one is savings bonus. This is like a loyalty bonus for staying with the company. So, when you receive $250 or above in base commission check, so you get paid that much money, you are going to get an extra 15% bonus that will be put in a savings account for you, similar to what you call the Providence Fund. सेविंग्स बोनस जो है नाम से ही पता चलता है कंपनी क्या करती है हमारे लिए. एक जैसे इंडिया में ये प्रोविडेंट फंड का जो कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारा टीम, और वो बेस कमीशन जो है हमारे टीम को अटैच्ड है, तो जब भी हमारा बेस कमीशन $250 या $250 के ऊपर हमारा जाएगा वो कमीशन, तो उसका 15% कंपनी एक साइड अकाउंट में जैसे जमा करते रहता है. और जब वो अमाउंट 10,000 is not here, right? Okay, that's जमा होते जाएगा, और नेक्स्ट स्लाइड पे कब तक जमा होते जाएगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे. Okay, so as an example, I've got it there in dollars and rupee. If your base commission was $2,000, 15% of that is $300. So you get paid your money in full, the $2,000, but extra $300 gets put into your savings fund. तो ये हम मान के चलेंगे कि चलो बेस कमीशन फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में हमको $2,000 मिला है, उसका 15% जो है कंपनी निकाल के हमारे सेविंग्स बोनस के अकाउंट में जमा करेंगे, और वो है 300 USD. कन्वर्जन्स भी दिखाया है यहाँ पर, दैट इज 27,000. Yeah, 300, yeah. And it's every week. Now, just like a traditional fund, as money goes in every week, when you hit a total of $10,000, you can actually take it out in one big sum. So you'll get one big check for $10,000 in one amount you can use. And after that check, you do not lose your savings bonus. You can still earn the bonus every week, up to $500 a week, but they pay it every 4 weeks. तो ये सेविंग्स बोनस जो है हमने बोला कि कंपनी साइड में एक अकाउंट में जमा करते रहता है, वो तब तक जमा होते जाएगा जब तक ये $10,000 अमाउंट नहीं पहुंचता. और जब ये 10,000 का अमाउंट जब पहुंच जाएगा आपका सेविंग्स बोनस का अमाउंट, तब हमें एक ये लंप सम में मिल जाएगा, और वो इंडियन रुपीस में जब हम कैलकुलेट करते हैं वो है 9.09 lakhs. और उसके बाद जो है वो जमा नहीं होते जाएगा, ये हम हर 4 वीक्स में विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज $500 पर वीक, और वो इंडियन रुपीस में कैलकुलेशन जो है वो है 45,485 रुपीस. Yeah, and you get that paid every month, so you like 1.8, whatever it is, every month. Okay, the other bonus I want to share with you is a lifestyle reward. So these are like credits that you get for building your business.
So as you build your business, when you get titles, new customers, new brand partners, you're given credits to use, and they're like travel dollars. So it's money, but it's in credit. So if you want to go to an event or one of our holiday escapes, you can use those travel dollars to pay for accommodation and flights. ये जो लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स है या लाइफस्टाइल क्रेडिट्स जो है, जो भी आपके अकाउंट पे एक्टिविटी होता है, जब आप टीम बिल्ड करते हैं, किसी को नया लेकर आते हैं टीम में या प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जो भी एक्टिविटी अकाउंट पे होता है उसके लिए हमको कंपनी रिवॉर्ड करता है। और हमने ऑलरेडी 4 तरीके के बोनसेस हमने देख लिया है और ये लाइफस्टाइल 5वां है। तो लाइफस्टाइल पॉइंट्स जो है ये ऐड होते जाता है और ये हम ऐसे रिडीम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ट्रैवल के लिए स्पेशली, क्योंकि साल में 2 या 3 इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और उसके लिए ट्रैवल के लिए या अकोमोडेशन के लिए हम ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। So I want you to know with this compensation plan, it is available in 50 plus countries. So as Sasha said before, there are 2 plans, Plan A and Plan B, depends on the country. The company's debt-free, you're in safe hands. The turnover is over 400 million per year, and we're the highest paid to brand partners. So you'll notice all the companies on the right-hand side here, but what I want you to see is who's at the top. We pay the most at 51%. हमारा जो है कॉम्पनसेशन प्लान, ये एक ग्लोबल सर्वे में हमें एक नंबर 1 का टाइटल मिला है। और अगर आप कंपनीज के नेम्स देखेंगे, यहाँ पर कुछ कंपनीज इंडिया में भी हम जानते हैं, ये कुछ कंपनीज को परसेंटेज तो कंपैरिजन अगर करेंगे तो बहुत अलग है। 51% है हमारा कमीशन का और हम 50 प्लस कंट्रीज में हैं। इंडिया जो है 52वां कंट्री होगा और डेट फ्री है। आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर डेट, कोई मुझे हेल्प कीजिए प्लीज। व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर डेट? चैट में आप डाल सकते हैं, बट दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव। पिछला जो हमारा कंपनी था वो डेट की वजह से ही हमने लूज किया है बिजनेस, लेकिन ये एक डेट फ्री कंपनी है तो मतलब उसका सिक्योरिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। डेट का मतलब मैं बताता हूँ। डेट का मतलब ये है कि जो आपकी पेएबल जो होती है इनकम से रिलेटेड, जो आपकी इनकम है कंपनी की, जो टर्नओवर है, उसमें ऐसा कोई डेब्ट तो नहीं है जो आपको पे करना है किसी और को। जो बचता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, जो भी ऑल ओवर एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करते हैं। तो कोई ऐसा देनदारी नहीं है उस कंपनी में। राइट, थैंक यू भरत। Thank you. And that's pretty much it. That's the presentation. If you've got